Hi students, sorry. Hi students, good morning. And now let us continue with the topic of rise of nationalism in Europe. Okay, so now we had seen till now that there were certain events which were taking, place back in the part of the central as well as the north and the south, parts of the Europe. Finally, the Treaty of Vienna actually led, the defeat of, after the defeat of actually Napoleon, the Treaty of Vienna now finally gave the powers back in the hands of conservatives. The Bourbon dynasty, which was actually being, previously removed or being overthrown by the revolutionaries, is now being restored. Belgium was again being, given the part to some other place. Same was the part with Genoa, which was given to Piedmont, and so on and so forth. So you actually saw that a lot of things which were being previously done, or the reforms which were being taken by the revolutionaries, are now were in the stage of undone. So they were being now, again removed back, and the old conservative or the monarchical order was finally back in place. Now, how did it impacted actually the entire, Europe all in general? How did the public actually respond to it? Today we are going to see that. The main objective of revolutionaries, please understand, once you will become liberal, you will become free, you cannot actually become bonded again. तो कहीं ना कहीं वो अंदर तो रहता ही है कि मैं फिर से फ्रीडम करूंगा, मैं फिर से अपनी कंट्री को नेशन स्टेट बनाऊंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड द सेम पार्ट वाज ओवर देयर विद द revolutionaries also. The main objective of revolutionaries was that particular commitment to oppose the monarchical or the absolutist form of government and to restore the liberal or the freedom of European countries. To oppose monarchical form established after the Vienna Congress. The aim of creating nation states. So ultimately it ends up only onto one thing, that दोबारा से उन लोगों का मन था that हम फिर से nation states बनाएंगे, or we are going to again create the nation states. Now, the Giuseppe Mazzini, who was born in Genoa in 1807, guys, again a date which is very important with respect to now, because he will be the so-called leader who will now, lead the revolution. Now, Giuseppe Mazzini was born in where? In Genoa. Remember, Piedmont में Genoa को आपने merge करवा दिया था. Okay, in 1807. After now, at a very young age, he started rebelling. और उसने रेबेल करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द मोनार्कियल पॉलिसीज के अगेंस्ट में, एब्सोल्यूटिस्ट पॉलिसीज के अगेंस्ट में ही स्टार्टेड फाइटिंग. ही वाज अ वेरी यंग मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी इन कार्बोनारी. ओके, तो वो उस टाइम पर एक यंग मेंबर था of the secret society, and you already know that these secret societies were being funded and being run by the revolutionaries to make sure that those European countries would once again gain back their status of nation states. He was at the age of 24, imagine he was that young, at the age of 24 he was being thrown or being sent to exile कि यहाँ से बाहर चले जाओ नहीं तो we'll kill you. And he was sent to exile in the year 1831. Why? Because he, in the year 1831, was responsible for an uprising in Liguria. Okay, so he was the main person behind the entire, revolution in Liguria, which was, of course, a region in Europe. Now, after that, he was being sent into exile, yet the revolutionary inside him did not die, and he furthermore founded two more underground societies, very important part, and the name were Young Italy, which was being set up in Marseilles, and the Young Europe, which was set up in Bern. Okay, so remember these two. So who actually set up these two secret societies? It was Giuseppe Mazzini. Two more underground societies, Young Italy, which was the Marseilles, and the Young Europe, which was Bern. His thoughts of Italian liberty, और जितने भी जो revolutionaries थे, actually हर एक के दिमाग में एक ही thought था that we are now going to make our country free of all these oppressors.
So thoughts of Italian liberty and his continuous relentless opposition frightened conservatives. So जितने भी जो कंजर्वेटिव्स थे, जो एब्सोल्यूटिस्ट थे, ऑफ कोर्स उनके लिए तो मिस्टर मैजनी कौन बन जाएंगे? विलन. एंड दैट्स व्हाट मेटरनिच, याद है आपको? मेटरनिच वाज द द कंजर्वेटिव ऑर्डर का अगेन जिन लोगों को जो जनरल बनाया हुआ था, जिनके प्रेजेंस के अंदर द वियना कन्वेंशन हुआ था और द वियना ट्रीटी हुई थी. सो मेटरनिच एक्चुअली कॉल्ड मिस्टर द मैजनी एज द एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर. तो जितने भी कंजर्वेटिव्स थे उसके अंदर जो जनरल थे उनके, दैट वाज मेटरनिच, एंड मेटरनिच ने बोला दैट दिस गाय मैजनी इज एक्चुअली द एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, सो ही शुड बी आइदर एग्जीक्यूटेड और किल्ड. Now came the age of revolution, which is the next topic. Now in the July 1830, remember आपको यदि याद होगा उसी particular time पे even in India after around 25 years 1857 का एक revolt हुआ था इंडिया के अंदर, which was very very famous at that time, but unfortunately it was being curbed because it was not that united kind of movement. So even in the July 1830 there was this first revolution in France. Now France तो सर एक छोटी सी कंट्री है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रांस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल सेंटर ऑफ दिस सो कॉल्ड यूरोप, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फ्रांस में यदि कुछ भी होता था तो उसके रेमिफिकेशंस या उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर फील होते थे, एंड स्पेशली यूरोप में तो बहुत ज्यादा. एंड दैट्स द रीजन व्हाई इफ यू सी मेटरनिच आल्सो सेड दैट इफ इन फ्रांस if France sneezes means यदि उनको छींक आती है, the Europe will catch cold, बाकी जगह सर्दी पड़ जाएगी. That means France was that economical center, and this revolution happened right in the heart of France. So July 1830, the first upheaval, the first uprising actually happened. And what happened? याद है Bourbon dynasty, the Bourbon dynasty को दोबारा से जब रेस्टोर किया था अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना, उसको दोबारा से रिवोल्यूशनरीज एंड लिबरल्स ने क्या किया? ओवरथ्रो कर दिया. वी विल नॉट डिसेंड टू दोस, एंड फाइनली उनका एम्पायर कोलैप्स हो गया. द बर्बन डायनेस्टी का वर थ्रोन इन फ्रांस. द लिबरल रिवोल्यूशनरीज फाइनली सेट अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द लिबरल रिवोल्यूशनरीज फाइनली सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब इन लोगों ने बोला मोनार्कियल रूल तो रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स होंगे, मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा जाएगा. जबकि बर्बन डायनेस्टी के अंदर तो ऑफ कोर्स गाइस देयर वाज नो रूल एट ऑल. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज बीइंग हेडेड बाय whom? None other than Louis Philippe. Okay, so remember guys that Louis Philippe was the first head of this constitutional monarchy after again the uprising of whom? The July Revolution के बाद में. So कुछ terms ध्यान रखना. First of all, why this Louis Philippe was such an important person? Second, what happened in July Revolution? And third, why is this particular revolt so famous? Now this revolt also became a fundamental base for all the other revolutions because अब लोग उसका नाम ले लेकर के लड़ने लगे. They started fighting for what? Fighting for independence. July Revolution was the uprising. If you can see, जुलाई रेवोल्यूशन के वजह से अपराइजिंग होना चालू हुआ कहाँ पर? ब्रुसेल्स के अंदर. एंड ब्रुसेल्स विच एक्चुअली लेड टू, और ब्रुसेल्स में ये जो रेवोल्यूशन था वो उसने इतना ज़्यादा बड़ा एक नेचर एक ले लिया था, एक पिक्चर एक ले लिया था, दैट बिकॉज ऑफ दैट बेल्जियम was now being breaking away from UK of Netherlands. UK means United Kingdom of Netherlands. सो बेल्जियम जिसको पहले एक दूसरे जगह का एक हिस्सा बना दिया था, रिमेंबर ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर, एंड वापस से बेल्जियम ने बोला नाउ वी विल बिकम अ सेपरेट नेशन स्टेट और अ सेपरेट कंट्री, एंड दे ब्रोक अवे फ्रॉम यूके ऑफ नेदरलैंड्स. सो नाउ इसका जुलाई रेवोल्यूशन से क्या कनेक्शन है? एज आई टोल्ड यू that जब एक रेवोल्यूशन होता है तो उसके साथ में बहुत सारे छोटे छोटे मल्टी रेवोल्यूशंस और होना चालू हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंड. ओके, Greek War of Independence. Now, Greek War of Independence was actually being run where? That is the collapse of Ottoman Empire. That was again a very, very important, topic. Please understand, the Ottoman Empire was being run by, the Muslim Khalifas, right? If you remember, guys, the Ottoman Empire, Khalifas, okay?
सो देयर वाज दिस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जितने भी जो ग्रीक्स थे उन लोगों ने बोला that actually our culture is much better than this particular Muslim culture. That's what they thought and they felt. So they said that we would like to have now independence because we are Greeks and we do not want to live under the rule of whom? The Khalifas. And who was the ruler of whom? The Ottoman Empire. And remember now, जब इंडिया के अंदर भी बात आती है तो we take this name of शौकत अली and लियाकत अली because of whom? Ottoman Empire के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था. But they started by the way protesting for the rule of Ottoman Empire, not against it, right? So Greek War of Independence actually happened against the part of Ottoman Empire and they wanted freedom from this Muslim rulers. Now in 1821, the nationalist Greece got support from Greeks in exile. अब कुछ ग्रीक्स जो फियर ऑफ रेप्रेशन की वजह से वहां से भाग गए थे या जिनको खदेड़ दिया था या जिनको बाहर निकाल दिया था, now they also started supporting this particular movement and said that we are supporting your movement, please carry on. So जो ग्रीक एग्जाइल में थे, जो बाहर भेज दिया था, उन लोगों ने भी नेशनलिस्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. Now इसके अंदर जो वहाँ के जो पोएट्स थे और जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने भी पेंटिंग्स एंड स्टोरीज एंड फोक टेल्स एंड फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स एंड पोम्स, इन सब के साथ में उन्होंने लेकर के पूरा का पूरा मास मोबिलाइज करना स्टार्ट किया. सो पोएट्स एंड आर्टिस्ट ऑल्सो मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन, बिकॉज जब कोई सॉन्ग बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है या हर एक के मुंह पर आने लगता है, देन पीपल एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग दैट दैट इज देयर सॉन्ग, राइट? सो पोएट्स एंड आर्टिस्ट मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन ऑन स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर. और इन लोगों ने स्ट्रगल करना चालू किया अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर. English poet whose name was Lord Byron, and he started funding this particular movement. So जो English poet था named as Lord Byron, उसकी बुक्स उस टाइम पे और पोम्स के लिए बहुत फेमस थे, उनने इस पर्टिकुलर मूवमेंट को फंड करना स्टार्ट किया. एंड जब ये वॉर एंड स्ट्रगल हुआ, he died in that particular war of independence in 1824. After when the Lord Byron died, then the Treaty of Constantinople of 1832 was signed. So remember two important treaties, one was the Vienna and another was the Constantinople. So now Constantinople of 1832 में एक और treaty sign हुआ and जिसने finally acknowledge किया the Greece as an independent nation. That now Greece will no longer be serving the aims and objectives of the Ottoman Empire, but instead it will be a free nation state. So Treaty of Constantinople of 1832 was very important date, okay, or the event. Now culture, stories, poetry, music, all of this actually helps people to relieve their stress and also help people to think in the way these particular books are thinking. So all of this culture also, gave a nationalistic feeling, a nationalistic view to all the Greeks. Now romanticism, romance, love. Now romanticism and the romantic artists ने उस टाइम पर बोला कि actually में you need to feel your own intuitions and the mystical feelings and all this, which is happening is just because there is some god or something like this. They always denied the presence of logic and science and rationale in their opinions. So जितने भी जो romantic artists थे, उन सब लोगों ने बोला कि ये जो science है या ये जो logic है, जो rational है behind every answer, इन सब के अंदर कुछ नहीं रखा. So they used to be huge amount of critics for all these people who used to be followers of science. ना रोमांटिक आर्टिस्ट ने साथ में ये भी बोला कि आप बेसिकली अपने अंदर ही जो फीलिंग्स चल रही हैं, आप उन पर ध्यान दो rather than on science and logic. They started saying that focus on emotions and the mystical feelings and the mystical happenings all outside the world. Now Johann Gottfried, okay, so Johann Gottfried ने एक बोला the dust woke. Now what do you mean by the word the dust woke? जोहन गॉटफ्राइड ने बोला कि एक्चुअली में कल्चर का मेन लोगों को तब मालूम पड़ेगा जब लोग अपने यहाँ के फोकलोर्स, अपने यहाँ की स्टोरीज, अपने यहाँ के कल्चर के बारे में जानना चालू करेंगे. सो मिस्टर जोहन गॉटफ्राइड
actually focused or emphasized the part of culture into the normal human beings. He said that it is the folklores and the folk stories and all those particular poems and hymns which actually lead to what? Which actually lead to the nationalistic feeling in Greeks. Okay. So this is guys for today. Tomorrow once again we are going to take another lecture continuing this particular part. We have almost done around 15 and 16 pages. Now tomorrow we are going to complete around page number 16 to page number 19 ke aaspas. So just be with me over there guys, and I think another 4 days and 5 days and this chapter would get over. Thank you guys so much once again for being with me. Enjoy, chill, relax. Relax does not mean relax. Of course, there's going to be a test. So enjoy, guys. See ya. Bye.